doing what Ajay spoke about. There was a civil society initiative. Civil society कुछ नाम सा बन गया है, पर people's movements of various kinds came together under a label Yedilu Karnataka, which is to say Awake Karnataka. So I spent 2 months working in the background, because obviously I don't speak the language, so I spent 2 months eating some good South Indian food and learning more about the state and learning something about the election. So I thought I'll share some of those things with you. I have 4 points to make. One is about what is it that was at stake in the Karnataka election. Second, about why did we have the kind of result that we had. Third, what are the consequences of the result. And fourth, what are the lessons that we can learn. अभी भी वो मास्टर वाला अंदाज गया नहीं है, क्या करूं. 4 points, blackboard पे लिख के 1, 2, 3, 4. What was at stake? Karnataka election was not an ordinary election. It was not an election merely to elect who would be kaun banega Mukhyamantri for next 5 years in Karnataka. At stake was something much bigger. Because we are going through a phase in our history where our republic is being dismantled. Not merely democracy, not merely liberal democracy, not just constitution, not just some protocols, not just secularism. All of this put together and more. Our republic itself. Why do I use the word republic? To capture it all, we can have some discussion at some stage. But basically, a shared political community that comes together to abide by certain political frame with some shared values. The entire edifice is right now under challenge. Karnataka was a very critical, could have been a very critical turning point. आजकल होता है ना सड़क पे कि आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक आप थोड़ा सा गलत लेन में आ जाते हैं. वो गलत लेन आपको फ्लाईओवर पे ले जाती है और फिर बताते हैं अगले 15 किलोमीटर तक यू टर्न नहीं है सर. This is what Karnataka election was. This was entering a lane which would take you to a flyover, after which for 20 years there was no U-turn. In that sense, I think I am not quite sure that populism would run its own course and we will be back to better times. Because that presupposes continuity of normal politics. Normal politics होते जरूर होगा. Populism will run its course. Of course people will get tired and sick and tired of this nonsense. But by the time they get sick and tired of this nonsense, will they have the elementary structures left which they can use to throw them out? No. That is what is happening here. पहले आप मीटिंग सेमिनार हॉल में करते थे, आज आप यहां कर रहे हैं. आज से 5 साल बाद आपको किसी अंडरग्राउंड बेसमेंट में करनी पड़ेगी ये मीटिंग. दिस इज द डिफरेंस. सो व्हाट इज एट स्टेक हियर इज द वेरी सर्वाइवल ऑफ द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स व्हाट वी कॉल द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. एंड वी डोंट हैव ए वेरी लॉन्ग टाइम टू डिफेंड इट. कर्नाटका, इफ द बीजेपी हैड वन कर्नाटका, आपने देखा त्रिपुरा पे कितना डंका बजाया था. अगर कर्नाटका जीत लेते, दैट वुड हैव बीन हर टीवी चैनल पे चलता. 2024 इज ए डन डील. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 29. ये पहले हो चुका है, आज की मैं बात नहीं कह रहा. ये 6 महीने पहले हो रहा था. यूपी इलेक्शन के बाद शुरू हो गया था ये सब. और फिर होता कि भारत जोड़ो यात्रा तो फुस हो गई, पंचर हो गया, और ये तो पप्पू रह गया, और अब तो बस मोदी ही आएगा. और उसके बाद चेंज करना बेहद मुश्किल हो जाता. कर्नाटका इलेक्शन कुड हैव शट द डोर्स फॉर 2024.
That's why people like me who had no special expertise, मेरे कहने से 2 लोग वोट थोड़ी बदलेंगे कर्नाटका में, but we thought that everyone has to put every ounce of it to make sure that at least the door remains open. That was the challenge. That is what was at stake in Karnataka. I said in Hindi, ये भारत के स्वधर्म की रक्षा का कुरुक्षेत्र है इस वक्त. That this was a battle to defend the soul of India, the idea of India. But a battle which is fought for such high stakes is actually not fought on the ground with those principles. 1857 was first battle of India's independence. And any historian could easily demonstrate that those who were fighting were not fighting for anything like India's independence. They had all kinds of other motives. हमेशा हिस्ट्री में हर कोई चीज जिसको पुरानी अल्थोजेरियन लैंग्वेज में कहते थे ना, ओवर डिटर्मिन्ड, ये प्रोफेसरों के रहने से आदत खराब हो जाती है, कुछ कुछ पुराने शब्द याद आ जाते हैं, ये ओवर डिटर्मिन्ड सा रहता है मामला. सो दिस जस्ट a battle for something big is not necessarily played out on the ground for those, by the actors, for those principles. BJP was indeed fighting to retain the dominance of politics of hatred, but its own candidates, many of them were trying to convince local Muslims कि देखो हमारी पार्टी करती होगी, मैं तो आपके लिए काम करता हूं ना. All this was happening on the ground. So this battle on the ground was being fought through multiple things. There was a question of sheer incumbency. सरकार अच्छी चलाई नहीं चलाई, 40% भ्रष्टाचार सरकारा, which was a very dominant theme in this election. Nothing to do with those larger principles that we are talking about. There was also the issue of, what specific MLAs would do. There was the question of caste and community. Very careful logics. ये सब बीजेपी बाहर आके तो बोलती है कि बाकी सब कास्ट पॉलिटिक्स करते हैं. मैंने देखा है जब बीजेपी जीत जाती है उसके बाद कास्ट पॉलिटिक्स का एनालिसिस नहीं होता. जब बीजेपी हार जाती है तो कहा जाता है कि कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से सब हो गया. बीजेपी एम्प्लॉयज ए वेरी इंट्रिकेट कास्ट इक्वेशन ऑन द ग्राउंड. तो वो भी था. सो ऑल दिस वाज बीइंग प्लेड आउट. टू बी वेरी ऑनेस्ट, माय क्वेश्चन इज नॉट व्हाई डिड कांग्रेस विन दिस इलेक्शन. My real question is, why did Congress not win it much bigger? Honestly, when the election began, for all these local reasons, the election was loaded so much against the BJP. I mean, in a state where people routinely change governments after every 5 years, in that state where the BJP had run such an incompetent and corrupt government, करप्शन का हालत यह था कि सरकारी ठेकेदार प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे थे कि बड़ा करप्शन हो गया. कभी सरकारी ठेकेदार को लिखते सुना है आपने? गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, मतलब द एपिटमी ऑफ करप्शन जो होता है, वो बेचारे कह रहे थे कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा हो गया. और ये मठ वाले कितना अच्छा, मतलब क्योंकि धार्मिक पार्टी है ना, तो बाकी सबसे 40% लेते थे, मठ वालों को 10% ऑफ दिया था, कहा था आपसे 30% लेंगे, लेकिन 30% तो आपसे भी लेंगे. All this is on paper, on record, protest. So in a state where anti-incumbency is the norm, where BJP was running such an incompetent and corrupt government, where BJP was a divided house and for a change Congress was united. I mean, ये भी आपने सुना है कभी कि Congress is more united than the BJP? My question is, in that state, why did Congress not win 180 seats? अगर बीजेपी होती, मैं आपको सच बताता हूं, अगर बीजेपी को ये 3 एडवांटेज होते और उसके बाद कांग्रेस ने वो जो
5 guarantees दी. You know, after a long time, I think Congress understood who its voters were. And they aligned their electoral campaign to who their real voters were. Poor, women, rural, farmers, उनके साथ किया. तो ये सब होने के बाद अगर बीजेपी को ये 4 एडवांटेज होते, बीजेपी would have won 180 out of 224 seats. And the reason Congress could not win that, so मेरे लिए सवाल actually ये है कि why did Congress not do that well? And the answer is the sheer election machine. The difficulty is that we don't sufficiently discuss these issues. ये बिल्कुल वैसा ही, आप में से जरूर कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट्स जरूर होंगे ना, तो नहीं होंगे, तो इंटेलेक्ट होना और एग्जाम में अच्छे नंबर आना दो थोड़ी सी अलग अलग चीजें होती हैं. मैं नहीं कह रहा कि जिनके अच्छे नंबर आते हैं वो इंटेलेक्चुअल नहीं होते, लेकिन दो अलग चीजें हैं. इसी तरह से जनता के बीच में अच्छा काम करना और इलेक्शन जीतना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं. देयर इज होल मैकेनिक्स ऑफ इट. जैसे एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेने के मैकेनिक्स होते हैं ना, ये 1.5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, फला यूनिट से आएगा, इसके अनसॉल्व पेपर ये कर लो, ये सब चीजें होती है ना. सो व्हाट यू नो, सो मैं कहता हूं जैसे जिस जमाने में निवेदिता और मैं स्टूडेंट थे, उस जमाने में हमारे लिए था कि टेक्स्ट बुक पढ़ ली, एग्जाम देने चले गए, अच्छे मार्क्स आ गए. आजकल क्या होता है, कोटा में आप जाते हैं, कोटा में कोचिंग लेते हैं, है ना, और उसके बाद आप आते हैं. सो कांग्रेस मतलब बीजेपी और बाकी सब पार्टियों के इलेक्शन लड़ने में उतना ही डिफरेंस है जितना कि कोटा की कोचिंग में और पुराने स्टाइल के एग्जाम देने में फर्क है. सो बीजेपी ऑलवेज हैज दैट एडवांटेज. Where they should lose massively, they lose only mildly. Where they should lose marginally, they actually win. So something of that kind happened in Karnataka. But to my mind, the things that actually played out, in fact, the most interesting thing was the issue of, the entire issue of secularism, of Hindu-Muslim issue, of the onslaught on the Muslims. That was a non-issue in the election. Non-issue does not mean that it did not influence people. At least it was not spoken about. Muslims decided not to foreground this issue in public conversations because they thought the consequences would be grave. Chup rahe to zyada acha hai. And Hindus decided to, because they were so sick and tired of the misgovernance, they decided to not foreground it. उसकी वजह से नॉर्मल चीजें आई ऊपर, और नॉर्मल चीजों के ऊपर आते ही, because the whole thing was loaded so much against the BJP, almost everything in that should matter in routine electoral politics was loaded against the BJP, and they lost. What are the consequences? मैं बार बार ये बात कहता हूं, इलेक्शंस में the intentions that go into the making of an election outcome and the consequences can be entirely different. तो जो हुआ वो मैंने आपको बताया किस वजह से हुआ. इसके बारे में कई सवाल हो सकते हैं, we can discuss that. मेरे पास कुछ डेटा वगैरह भी पड़ा है, we can talk about it. The consequences are actually far reaching. और यही होता है, बिल्कुल एक मंडेन सा गेम होता है, बहुत ही कोटिडियन चीजों से खेला जाता है, और उसके consequences इतने far reaching होते हैं that we have therefore a temptation of reading the consequences back into intentions. मगर वो actually होता नहीं ऐसे. The consequences are, उस दिन रात को हम बैठे जब इलेक्शन आउटकम हुआ, रिजल्ट आया, सो मैंने किसी दोस्त से पूछा कि कैसा महसूस हो रहा है. उसने कहा हवा में ऑक्सीजन ज्यादा महसूस हो रहा है. I think that sort of summed it up. है ना, कि हवा में ऑक्सीजन ज्यादा महसूस हो रही है. सडनली ऐसा लगा कि हाँ कुछ है, मगर ये टेम्परेरी भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि बहुत वक्त चले. What it did was, Karnataka election outcome ensured that 2024 remains an open game. And that's a very big achievement. It does not ensure
that BJP will lose in 24? Of course not. But it keeps the game open. It was a very major setback to politics of hatred. It meant so much to, generally I would say minorities, but specifically Muslims, जो निवेदिता बात करी थी जिस इमेज की, ऐसे न जाने कितनी लड़कियां, कितने लोग उस इलेक्शन के दिन देख रहे थे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और इस आउटकम ने एकदम उस तरह की पॉलिटिक्स को कुछ टाइम के लिए सबड्यू कर दिया. इसको ओवररीड नहीं करना चाहिए. तो मैंने लिखा भी इसके बारे में, मैंने कहा कि नफरत हारी है लेकिन अभी मोहब्बत की जीत नहीं हुई है. सो द कंसिक्वेंस ऑफ दैट इज दैट पॉलिटिक्स ऑफ बिगॉटरी, हेट्रेड हैज बीन डिफीटेड. इट डज नॉट मीन, कई बार हम बहुत स्ट्रांग उसकी रीडिंग्स करते हैं, कई अखबार वगैरह के अंदर मैंने देखा कि सेकुलरिज्म की ट्रायम्फ हुई है. एक मायने में हुई है क्योंकि उसके कंसिक्वेंसेस जो हैं सेकुलर पॉलिटिक्स को मजबूत करने वाले हैं, लेकिन उसके इंटेंशंस में ऐसा सोचना कि कर्नाटका का वोटर बहुत इतने सालों की जो नफरत वहां इंजेक्ट की गई है उसको अचानक खत्म करके कर्नाटका में सेकुलरिज्म आ गया है, वैसा कुछ हुआ नहीं है. बस उन्होंने उसको फोरग्राउंड नहीं किया कि चलो इस बार ये नहीं. और मुझे इसलिए महसूस होता है कि वो साउथ इंडिया एक्सेप्शनलिज्म वाली बात शायद सही नहीं है, बिकॉज एटलीस्ट कर्नाटका इज नॉट ए वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर साउथ इंडियन एक्सेप्शनलिज्म. आई थिंक टू माई माइंड केरला एंड तमिलनाडु वुड बी वेरी स्ट्रांग केसेस फॉर दैट. कर्नाटका for some time has looked like one state from South India which resembles North India in some ways. And the hatred, prejudices that have been injected were deep, continue to be there. And the battle against that would be a very, very long battle. लेकिन फिलहाल उसको एक ब्रेक मिली है, और अगर आप सेकुलरिज्म को बचाने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आपको एक फुटहोल्ड मिल गया है उसके लिए. दैट्स ऑल दैट हैज हैपेंड. लेसन्स क्या हैं इसके? पहला लेसन ये है जो दो चार बार हो भी चुका था. दिस होल थिंग अबाउट इनविंसिबिलिटी ऑफ मिस्टर मोदी इज ए मिथ, इज शैम. एक बार नहीं, कितनी बार हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसी मिथ है हर 4 महीने में दोबारा रिसरेक्ट किया जाता है. दिल्ली में हारे, वेस्ट बंगाल में हारे, ये तो बड़े इलेक्शन थे जहां बीजेपी ने बहुत सीरियसली इन्वेस्ट किया था. रूटीन बाकी सब जगह जो हुआ वो अलग है. दीज वर इलेक्शंस वेयर बीजेपी एंड मिस्टर मोदी वेरी सीरियसली इन्वेस्टेड ए लॉट एंड देन दे लॉस्ट. एंड हाउ? 2, it demonstrates that politics of hatred can be defeated. That even if you have serious communalization of society, it is not necessary that the communal question will trump everything else. It can be sidelined. और मेरे ख्याल से कांग्रेस ने कर्नाटका में यही किया था. What Karnataka Congress did in Karnataka was to very carefully sidestep the हिंदू-मुस्लिम क्वेश्चन. वो एक जो मैनिफेस्टो में आ गया था वो भी एक अलग तरह का मामला था जिसको बहुत लोगों ने मिसरीड कर लिया. बट कांग्रेस बेसिकली साइड स्टेप्ड इट एंड फोकस्ड ऑन द गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक इश्यूज. टू माई माइंड दैट्स नॉट ए बैड टेम्पलेट टू बिगिन विथ. 2024 के लिए सेकेंड लेसन ये है दैट इफ यू एक्चुअली कीप योर फोकस entirely on issues of governance and issues of economy, you have much greater purchase than other issues. Someone might say, but why are you skirting the real issues? Why are you taking this shortcut? Is that not timid? Is that less than principled?
I would agree, and I would say, unfortunately, we have not created enough base for ourselves to be able to practice that kind of politics. In the very short term, if the idea is to create some space in this country, then smart thing for secular politics would be to take a principal stand on the secular issue, but not to foreground it. It is by not foregrounding this issue, I know this would be a very unpopular thing to say, लेकिन सच बात यह है कि कांग्रेस ने इसको फोरग्राउंड नहीं किया, इसलिए कांग्रेस इलेक्शन जीती. अगर फोरग्राउंड करते तो हार जाते. इसलिए नहीं कि ये इशू ऐसा है जिसको कभी फोरग्राउंड नहीं करना चाहिए, मगर इसलिए क्योंकि इसके लिए जितनी लंबी तैयारी की जरूरत है. बेसिकली वी हैव लॉस्ट ए कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल बैटल. हम वो सब हारे हुए सिपाही हैं, और एक वो लड़ाई हारने के बाद फिर भी हम सोच रहे हैं कि चलो ये बैटल तो हार चुके हैं, लेकिन क्या कुछ शॉर्ट टर्म रास्ते निकाल सकते हैं, तो फिर वो आपको यूं करके ही निकालना पड़ेगा. दैट इज द सेकेंड लेसन. द थर्ड लेसन इज व्हाट आई कॉल बेस ऑफ द पिरामिड पॉलिटिक्स. कांग्रेस ने जो किया वहां एसेंशियली यही था कि जो हमारा सोशो इकोनॉमिक पिरामिड है, लुक्ड एट दैट इन 4 dimensions. Look at it in terms of class. By class, I simply mean rich and poor. Nothing very complex. Second, gender. Third, caste. Fourth, rural, urban. In all these 4 dimensions, Congress got disproportionate support from the lower half of the pyramid. And all the evidence by now has come out. We know that last time in Karnataka, rural and urban areas voted in the same way. This time, basically Congress has won in the rural areas. Urban areas में अभी भी Congress नहीं जीती है. Urban areas is sort of evenly matched. It's in the rural areas that Congress had a major advantage. In the class hierarchy, as you go down this battle, the ladder, it's absolutely textbook. बिल्कुल textbook का वो जो बनता है ना क्रॉस, वो आप बना सकते हैं इससे. As you go down the ladder, Congress's votes increase, BJP's votes come down. बिल्कुल neat relationship है उनका. On the gender issue, Congress's advantage among women was almost twice as much as its vote share advantage among men. On the caste issue, it's the Ahinda politics. Basically, कर्नाटका की पॉलिटिक्स के बारे में जितना भी डिस्कशन होता है वो टॉप के 35% को लेके होता है. लिंगायत, वोकलिगास, ब्राह्मण्स, ये वो ऑल ऑफ देम कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 35% ऑफ कर्नाटका. और चर्चा खूब होती है, टिकट्स भी सभी नहीं को मिलते हैं, और वोट बाकी लोग देते हैं, और उन्होंने बाकी लोगों ने वोट देके कांग्रेस को जिताया है. दैट्स द अहिंदा पॉलिटिक्स ऑफ कर्नाटका. वो टिकट कांग्रेस ने भी इन्हीं को दिए थे, ऊपर 35 वालों को दिए थे, लेकिन वोट जो है वो. सो द बेसिक पॉइंट आई वाज मेकिंग वाज दैट इट इज द बेस ऑफ द पिरामिड व्हिच हैज which tilted heavily in favor of the Congress. And because the base is much bigger than the top, so BJP had the upper half, Congress had the lower half, because the bottom half is much bigger than the upper half. Congress won. But broadly speaking, that's what the sociology of election was in Karnataka. So what is the lesson? To my mind, the lesson is that if we want to carve out a space in 24, I don't know whether BJP will be defeated, may not be defeated, or about election forecasting, I wonder why people used to do that. I think it's not, it's not like weather forecasting. Weather forecasting आप कर सकते हैं क्योंकि आप उसमें कुछ नहीं कर सकते. मगर election forecasting इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम इसमें कुछ कर सकते हैं. So to my mind, the important thing is what can we do about it? Rather than speculate and forecast what would happen in 24, a lot can be done. So my question is, what can we do to make 24 different? And the lessons are this: BJP can be defeated.
It can be defeated provided you focus on the base of the pyramid, consciously do base of the pyramid politics, which is what Congress should have done all these years, but did not. And this base of the pyramid, incidentally, is not a politics of 50% or 60%. Actually, it's a politics of 98%. Because if you look at these four categories, those who are at the disadvantaged edge of either of these four, if you say any one of these four, 98% of Indian population is either woman or poor or rural or belong to SC, ST, OBC. So it's a politics of 98%, which is what needs to be done. Keep the focus firmly on issues to do with economy. Right now, economy is the pain point. Day before, 2-3 days ago, there was a survey by CSDS Lokniti team, of which I am not a member anymore. But the survey basically shows economy is the pain point. And it's a very serious issue. Focusing on economy. Attention to base of pyramid, focusing on economy and the non-performance of the government, and not allow yourself to be distracted. Congress almost allowed itself to be distracted by the Bajrang Bali Bajrang Dal issue.